एवरीवन वेलकम टू संजय चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज आम HTML रो टॉप मोस्ट 50टा क्वेश्चन आज आम नहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगो को आमर जो आस कम्युनिकेशन कॉन्स्टेबल से तो HTML रो प्रथम पार्ट आम सारी देचे। तो अभी सेकंड आउ 50टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आम डिस्कशन करें। देन लेट्स स्टार्ट। Dash HTML tag is used to mark header column for a table. कोड आमरा यूज होची ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब क्लास करिया पूर्व प्रथम मु बारंबार कहूँ कि थियोरी क्लास सब कर दिंतु। मोर चैनलटा केवल प्रैक्टिस बैच पिलांग पई एवं जो मैंने प्रैक्टिस कर परिबे MCQ थियोरी एथिरे थियोरी क्लास एथिरे मु करनी। Then the next question 52. Dash HTML tag is used to mark a row for a table. Table पे हमें कोड यूज कर सी ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Then your next question. Dash HTML tag is used to mark a column inside a row. Option A is the right answer. Then next question. Among the following options, HTML tag merge 3 columns to create a large column. Could have an option C. Then next question. Among the following options, dash HTML tag merge 4 rows to create a large row. Option D is the correct answer. Then next question. Dash create an ordered list. कोड हमारा ordered list create करें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Then next question. Dash creates an unordered list. Option A is the correct answer. Then next question. Dash declares a list item which may be part of ordered list or unordered list. Option C is the right answer. HTML form control commonly use dash tag for taking from input. Input पे हमरा को control commonly use होची ना ऑप्शन ए इनपुट। टैग गुड़ा मन रखिया बहुत इंपोर्टेंट कारण ऑप्शन एमती दबा जे बहुत कंफ्यूज ऑप्शन। HTML from is content inside dash tag. Option B is the correct answer. Then next question. Input tag in HTML supports dash attribute. Now option D is the correct answer. Type of value of name of and all of them. Then next to display a button in HTML from dash attribute is used in the input tag. Input tag हमरा कौन यूज है ना ऑप्शन A is the right answer. Then next question. To display a checkbox in HTML from dash attribute is used in the input tag. Koda na option B checkbox is the right answer. Then next question. To display a color selection input in HTML form dash attribute is used in the input tag. Now option C color is the right answer. Then next question. To display a data input in HTML from dash attribute used in input tag. Option D date is the right answer. Then next question. To display a date and time input in HTML from dash attribute is used in the input tag. टाइम और डेट पे हमें को इनपुट टैग हमें यूज करते ना डेट एंड टाइम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिस्प्ले ए फील्ड फॉर ईमेल इनपुट इन HTML फ्रॉम डैश एक्टिविटी यूज्ड इन द इनपुट टैग। ईमेल इनपुट कोड हमें यूज करते ना ऑप्शन ए ईमेल
क्वेश्चन गुड़ा बहुत इजी किंतु बट confusing. To display a file input dialog in HTML from dash attribute is used in the input tag. Option B, file is the right answer. Then next, to create a hidden file in HTML from dash attribute use. Now option C, hidden eta haba. Then next, to create an image selection tool in HTML from dash attribute is used in the input tag. कोड हमारा यूज है ना इमेज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट जीवा टू क्रिएट मंथ सेक्शन फील्ड इन HTML फ्रॉम डैश एट्रिब्यूट यूज. एटा समस्ते कहबे मंथ. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. टू क्रिएट नंबर इनपुट फील्ड इन HTML फ्रॉम एट्रिब्यूट यूज इनपुट टैग. क्रिएट नंबर नंबर पाई कोड हमारा हो ना. ऑप्शन बी, number is the right answer. To create password input field in HTML form dash attribute is used in the input tag. Input tag रे हमारे password में कोड यूज होची ना. ऑप्शन ए दिला मंथ, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी पासवर्ड, ऑप्शन डी दिला रेडियो ना. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पासवर्ड ही होगा ना. To create radio button input field in HTML from dash attribute is used in the input. Radio button by ऑप्शन कौन देला ना. मंथ तो हबनी, नंबर देछि, नंबर भी हबनी, पासवर्ड हबनी, रेडियो ही हबो राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. To create an input field to display numbers with a specified start, end and step value in HTML from dash attribute is used in the input tag. Kuda na range. Option A is the correct answer. To create an input field to reset all input element of a form in HTML from attribute is used in input tag. Kuda me use करूचे ना reset. Option B is the correct answer. To create search field behavior depend upon server implementation in HTML from. ऑप्शन कौन देला. रेंज देला, रिसेट, सर्च, टेल. कोड हबो ना सर्च. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. To create field for telephone number input in HTML from dash attribute is used in input tag. टेलीफोन पे हमें यूज करें कौन टेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. टू क्रिएट ए फील्ड फॉर सबमिटिंग द कंटेंट्स ऑफ HTML फ्रॉम टू द सर्वर डैश एट्रिब्यूट इज यूज्ड इन द इनपुट टैग. कोडा यूज ना सबमिट, टेस्ट, टाइम, URL. कोडा यूज हो ना सबमिट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट जो to create a text input field in HTML dash attribute is used in the input tag. Submit, text, time, URL. जेहेतु text पचार से हमारा कौन होगा ऑप्शन ना text. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. To create a time input in HTML dash attribute is used in the input tag. टाइम पचार से मैंने कोड हबो ना. ऑप्शन सी टाइम इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट टू क्रिएट ए फील्ड फॉर टेकिंग ए वेब एड्रेस इन HTML डैश एट्रिब्यूट इज यूज्ड इन इनपुट टैग. टेकिंग वेब एड्रेस भाई हमें बेसिकली कोड यूज करछे ना URL. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट. Most important question. 3. Option A is the right answer. Which HTML tag insert a line horizontally in a page. को टैग आम यूज करुचे ना. ऑप्शन सी HR. Then next what are the two main parts available in HTML document. टू मेन पार्ट कोडा हमर HTML डॉक्यूमेंट रे अवेलेबल अछि.
ना head and body. Option C is the right answer. Which character in HTML is used to indicate end tag? को टैगटा हमरा end ପାଇଁ शो करे ना ऑप्शन B is the right answer. Then next ଯିବା which symbol starts with HTML comment? को symbol ଟା HTML comment starts with HTML comments को symbol टा हमरा इधर option A is the right answer. Then next ଯିବା which attribute is used with TD tag to merge two cells horizontally? Now option A is the right answer. Then next ଯିବା which tag creates a checkbox for a from in HTML? Now option D is the right answer. Which HTML tag is used to add a row in a table? Option A is the right answer. Which HTML tag is used to divide a row into data cells? Option D is the right answer. Which is the correct syntax for adding alternate text? Could have ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एसबू कोड देछि एसबू बुझिବାକୁ हेले प्रथमे HTML ର थ्योरी जानिବାକୁ पड़ियो ताहले ऑप्शन गुडा इजीली मन रहियो नले बारंबार प्रैक्टिस करियो पड़ियो व्हिच इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट अलाइनमेंट ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक हाइपरलिंक में कोड यूज है ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट जो व्हिच इज द करेक्ट टैग फॉर एडिंग इन फ्रेम इन HTML इन फ्रेम एटा आई फ्रेम जोटा छे इन फ्रेम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट जो what is the correct HTML tag for adding a background color? Option B is the right answer, yellow. Then next, how do you add a link which will allow the visitor to send an email from the page? Kuda? Now option A is the correct answer. Then next, what will happen if the background image is smaller than the screen? What will happen? Option D is the right answer. Then next, which is the correct HTML tag for making text input field? Kuda? Now option B is the right answer. Then the last question. Which is the correct HTML tag for creating password field? Option C is the right answer. तो यहीपरि भाव में आमर इम्पोर्टेंट 50टा क्वेश्चन सरी जाइए बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये भितर अच्छी तो जो मैंने भी चैनल रे देखुछ वीडियो समस्त टे सब्सक्राइब कर दो थैंक यू।